अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शजीना आवाज आ रही है? जी खालिद साहब, आ रही है आपकी आवाज़। खालिद साहब, आपकी पहले आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, बस मैं चेक कर रहा था कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। जी जी, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सर क्या सलाम हाल है नवाज आपकी? अहमद साहब। खैरियत? तबीयत मिजाज ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अगेन इन दिस कोहोर्ट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से, चूँकि फाउंडर्स कोहोर्ट 4 के अंदर हमने कुछ न्यू सेगमेंट्स ऐड किए हैं, और जूम के सेशन, और साथ साथ में हम लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी कर रहे हैं इस सेशंस को। तो जूम के अंदर हमारे कोर 25 स्टार्टअप्स है जो कि हैकाथॉन और मुख्तलिफ स्क्रूटनी से होके हमारी इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में आए हैं, और वो जूम पे अटेंड कर रहे हैं। और जो हमारे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो वो भी इस कोहोर्ट का हिस्सा है, और वो वहाँ पर अपना लर्निंग कर रहे हैं। और उसमें उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने चैट के अंदर अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम एंड के अंदर एंटरटेन कर रहे हैं। एंड ऑफ द सेशन आप इस सेशन को एंगेज भी रख सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। आप ओवर टू यू सर, कि आप जो हमारे जूम के कॉल के अंदर मौजूद है, तो वो उनके साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं चैट के अंदर भी। तो हम वर्बली या जूम के अंदर भी उनके चैट्स और क्वेश्चंस लेंगे, और साथ साथ हम लाइव स्ट्रीम पे हमारी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज आती है, तो उनको भी हम एंटरटेन करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो ये हमारा कोड 4 के अंदर, जो कि हम पिचिंग सेशंस और मैन ट्रेनिंग सेशंस भी कर रहे हैं। तो ये आज का जो सेशन है वो मैन ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे, जिससे इस तरह पहले भी जो हमारी बाकी कोड्स के अंदर बहुत डिटेल में बात हुई है, डिटेल ब्रीफ और इंस्ट्रक्शंस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। तो आज भी हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ खालिद अहमद साहब। सो वी विल स्टार्ट इन फ्यू सेकेंड्स अच्छा इंशाल्लाह। इजहार, एक क्वेश्चन। जी जी सर। सो आई थिंक तुम उसको हम इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो अगर क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं और आप समझते हैं कि वो रेलेवेंट है जो टॉपिक को इस वक्त कवर कर रहे हैं, तो वो मुझे बता दें, तो उस वक्त मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम एंड पे जाएं। फिर एक टाइम कम होता है, तो वी हैव टू क्लोज दिस सेशन इन 1 आवर। So we will be able to answer the questions as we move forward. ठीक है? Is that work for you? श्योर सर, इंशाल्लाह वी विल ट्राई। Okay, thank you.
So, without further delay, we are starting the today's session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन कोहोर्ट फॉर फाउंडरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑन द टॉपिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट बाय रिस्पेक्टेड खालिद अहमद साहब, जो कि he is an adjunct professor, enterprise architect. He is an also expert in generative AI, LLM, and data analyst. और माशाल्लाह बहुत अच्छा बैकग्राउंड के साथ एआई के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में और एस्पायर के साथ उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है फॉर द पीपल एंड यूथ ऑफ पाकिस्तान. सो विद दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन आई एम इनवाइटिंग एंड लीविंग द फ्लोर टू रिस्पेक्ट खालिद अहमद साहब. You can also give a brief introduction of yourself. The floor is yours. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So, as you explained, मेरा नाम खालिद अहमद है. So my background is I've been in this industry, IT industry especially, for the last 40 years, and I've been living in Canada was almost 30 years, and I studied in Canada as well. My background is I studied in Pakistan, completed my master's in software engineering. Then I did my degree here in master's in management and also computer science as well. And I work as a currently I'm working as an enterprise architect and looking at I'm part of a public sector organization. I work for the government organization here in Canada. I do teach in multiple schools here in Canada. When I say schools, means the universities. So I teach in one of the university in US and as well as some like online courses I do take. I'm also an adjunct professor, as Harullah mentioned to you. My courses are the courses that I do take is more related to data and AI. So that's my specialty. In terms of the product management, so I'll try to help you understand the concept of the product management and how you can really make it. And the focus will be digital product management, not like a generic product management. But if you have some kind of a generic product management questions, then I'll try to answer that question as well. So I will start. I will share my screen and then I will start the presentation. So, okay, so let me just reshare it again because I think it's shared into a different monitor. I'll keep it here, so it's going to be easier for me to read as well. Oh no, wrong screen. Sorry. Share screen 2. That's what I did. Oh no, that's a screen 2. Let me. Why is it always going to this one? Anyhow, so I think I'll put it here. So don't worry. Sure, sir. I I was trying to share I have multiple screens. I was trying to put it in the middle of the screen, but somehow it's not doing it. Anyhow, so we'll start with some of the key concepts. So the objective of the course is to introduction to product management, fundamentals of product management, core stages of the product life cycle, and practical सर, exercise of आपका जो स्क्रीन है वो आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है. desktop. Show right? Is this the one you're seeing? Which screen you're seeing? यस, इट्स नाउ. बिल्कुल, अभी ठीक है Okay. सर. Okay, got it. Sorry. So it means I was right. Somehow it's showing me something different. श्योर सर. Okay, good. Okay, so I'll start with some of the key concept, the product vision, product strategy, and product goal. So product
Just the quick definition: any good service or solution created to meet customers' need or solve a problem. So that's the key. That's the definition of a product. Uh, let's take an example. And this example is this the smartphone. If you consider, जैसे आप इसको स्मार्टफोन को अगर आप समझते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है वो एक प्रोडक्ट है, तो इसमें मुझे बताइए कि और क्या क्या चीज को आप कंसीडर करते हैं एज अ प्रोडक्ट. सो जस्ट फॉर to make sure that you understand the concept. So you can respond it in the chat, or you can talk to me, like open up your mic and tell me what are the other product that you see in this smartphone. Sorry, I cannot see the chat. Izhar, do you see any responses in the chat? Uh, One responded. She said clock. Clock is a product. So that's a good one. So clock is a product. अगर आप समझते हैं तो इसको हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐप है, एज अ क्लॉक एज एन ऐप है. वो एक प्रोडक्ट है. आप इसको अगर आप देखें इस स्क्रीन के ऊपर, अगर नॉर्मली जो फोन है उसके ऊपर आप एक लेयर बनाते हैं जो कि स्क्रीन को प्रोटेक्टिव स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है, वो भी एक प्रोडक्ट कहला सकता है. इसका जो कवर है वो भी प्रोडक्ट कहला सकता है. वो कहलाता है, सॉरी. उसके अंदर जो सिम है वो भी एक प्रोडक्ट है. तो there are a lot of multiple products in this smartphone and everything is considered as a product. अगर आप इसको देखें, इसमें स्टोरेज है, उस स्टोरेज को आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्टोरेज जो है गूगल ड्राइव की स्टोरेज हो या इसमें वन ड्राइव की स्टोरेज हो जो कि एज ए सर्विसेज के तौर पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको जो मोबाइल फोन है जो आपको डेटा प्लान देता है, तो दोज आर ऑल्सो called as a product. So अगर आप इस go back to this fit any good services, so good आपको समझ में आ गई कि that's smartphone is a product as a good, but the services that you get it through that product is also called as a product as well. And the solution, as an app is a solution that you saw in that example, is also a product. So there's multiple definition that you can use as a product. So what are the different stages, product development stages are? So if you look at this is drunken walk, the first one, and then another one is we call it as a product fit, and the third one is hyper growth, and the last one is the scaling. So let's look at what are the drunken walk means to us. सो इन द ड्रंकन वॉक, जैसे आपको समझ में आती है बात के वॉक है जिसमें आप शेयर नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना उर्दू में लहरा के चलना, कि आप चल रहे होते हैं हिलते जुलते हुए, तो उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या बनेगा. तो इस बेसिकली यू आर नॉट श्योर, यू इन आइडियाइजेशन फेज, यू ट्राई टू वैलिडेट योर आइडियाज, यू ट्राई टू मेकिंग श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज गोना बी वर्किंग. आप उसको चेंज करते हैं, उसको ट्विक करते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं. सो दैट्स दिस स्टेज इज कॉल्ड द ड्रंकन वॉक. So in this stage, you adding features just competitors have them, constantly changing the product based on every customer comment, no clear roadmap or success metrics. Team does not know what the real goal is. So that's what the stage what you call it as a drunken walk phase. There's another phase that called as a product fit phase और स्टेज. यूजर्स कम बैक रेगुलरली. तो आपको अंदाजा होगा कि कोई ऐसी चीज है जो आपके प्रोडक्ट का जो फीचर है वो काम कर रहा है, और यूजर्स जो है उसमें वापस आना चाहते हैं, वो आपको इनहेंस करना चाहते हैं. कस्टमर गेट अपसेट इफ दिस प्रोडक्ट गेट डिसअपियर. तो अगर आप समझते हैं कि प्रोडक्ट को हम खत्म कर देंगे या इस सर्विसेज को या फीचर को डिसेबल कर देंगे, तो कस्टमर विल बी अपसेट. पीपल टेल अदर्स, मतलब ये कि जिसको हम लोग कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, इट स्टार्टेड reaching out to other people, and then you're knowing about the good things or the bad things about your product. Sales growth, your sales is gonna growing. So that's a product fit. Let's watch this video. I hope this is gonna work. Okay, can you guys hear? Let me know if you guys cannot hear the sound. How can I enlarge this one? Sir, no sound. So there is no sound, you said? Yes, there is no sound here. Okay, let me share again with the sound.
No, no, no. Legally, let go. Let go. Let go. You got a helping wrist. Ice cream for her birthday party. So anyhow, so the idea of this one, अगर आप इस बच्चे को ही देखेंगे, बच्चा तो नहीं समझता कि क्या खा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको जैसी कोई चीज मिली, बच्चा उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको पकड़ना चाहता है, होल्ड करना चाहता है। तो उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि वो बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इसी मकसद ये है कि जब आपका प्रोडक्ट इस लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो दैट मीन्स लाइक यू आर इन अ प्रोडक्ट फिट फेज और प्रोडक्ट फिट स्टेज। And then what you started thinking is how to do a growth, rapid customer or user growth, revenue increases sharply, product becomes must in its market. So that's what you call is an hyper growth kind of a phase. And then when you started thinking is scaling. तो आप जो है मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोडक्ट है, अगर आपने बनाया हुआ है वो, उसको आप कैसे स्केल करेंगे? अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है किसी स्पेसिफिक यूजर ग्रुप के मुताबिक, लेकिन आप जब स्केलिंग के टर्म्स में देख रहे होते हो तो आप ये समझते हैं कि नाउ हाउ टू आउट रीच टू अदर कस्टमर्स, हाउ टू गेट न्यू कस्टमर्स। इफ सिटी को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सिटी से हम कंट्री में कैसे जा सकते हैं, कंट्री से हम आगे उसको जो है वो ओवरसीज में या अदर कंट्रीज में कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो चीजें, देन यू आर स्केलिंग इट आउट, यू आर एडिंग इट टू एंड देन प्रोवाइडिंग द सिमिलर काइंड ऑफ अ सर्विस इन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपकी एक सर्विस एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो अब इसका मतलब है कि हाउ टू प्रोवाइड द सेम काइंड ऑफ अ सर्विसेज। अगर आपने एक ऐप जो है वो आईफोन के लिए बनाया है, तो अब आपको सोचना है कि मैंने आईफोन पे तो ये ऐप जो है मैं चला रहा हूँ, तो अब इस ऐप को जो है हाउ कैन आई प्रोवाइड द सिमिलर इन एंड्रॉइड बेस्ड, हाउ कैन आई डेवलप समथिंग एज अ web based thing, how can I provide some kind of an AI based services to that product as well. So आपको उसको स्केलिंग के लिए, इसको ग्रोथ के लिए आपको देखना पड़ता है। तो दैट्स अनदर फेज ऑफ इट। Then we're going to talk about the product vision. So what is the product vision? अगर आप विजन को सिंपल आम टर्मिनोलॉजी में अगर आप इसको समझें तो विजन आपको क्या कहते हैं? विजन इसका मतलब होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम दैट यू हैव अ ड्रीम इन योर माइंड। एक सिंपल मिसाल में एग्जांपल मैं देता हूँ नासा के लिए, कि नासा जो है उसको किसी से भी आप पूछेंगे तो नासा के बारे में आप सब समझते हैं कि नासा जो है वो रॉकेट्स बना के जो है स्पेस के अंदर शटल जो है वो नासा की वो भेजता है। तो किसी से भी आप पूछेंगे तो दैट्स गोना टेल यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द विजन इज, बट पीपल अंडरस्टैंड द नासा का काम है कि वो जो है वो रॉकेट बनाता है और स्पेस में भेजता है। तो दैट्स द वे all your employees, everybody in your company should be understanding what is the overall vision of your company organization is. I think we don't have enough time to go and watch this video, but that's how if I'll leave it the slide deck, and the engineer Izharullah will circulate the slide deck. Then you can watch this video. It's give you an example of the vision statement. But from the definition perspective, the future state of a product that a company or team desire to achieve. So whatever vision that you have it in a product, you will be putting it together in the vision statement. So we will look at the multiple vision statement from different organization. For example, from the Google's vision perspective, it provide and it give access to the world's information in one click. Does the Google provide? Amazon को आप देखें, Microsoft को देखें. So I put together the government of Canada का vision. So our vision is that by 2030, Canada will have one of the most robust national AI ecosystem in the world, founded upon scientific excellence, high quality training, and deep talent pools, public-private collaboration, and our strong values of advancing AI technologies to bring positive social, economic, and environmental benefits for people and the planet. So that's the vision of the government of Canada for the AI. So Pakistan might have the similar kind of a vision that recently it was produced and launched by Minister of the Planning. I did contribute to the AI visions of Pakistan as well. So contributed to that part of it. I'm part of the task force as well. Uh, so so looking at the visions, multiple visions, so that's how you describe your product vision, and then align with what are your dream, what are you think that you're dreaming for your product. Then we'll talk about this product strategy. Before we understand the strategy or product strategy, let's understand strategy in a simple language. What is the strategy means to us? So in a simple term, we call as a strategy
is the plan to get your destination. But the strategy consists of something that it gives you where you are at this moment and what are the obstacles that you're going to face it in order to get to a destination. Sometimes we do ask questions, जैसे हम कहते हैं कि normally a lot of people you guys use Google Map. तो आप गूगल मैप इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो गूगल मैप भी आपको डेस्टिनेशन में लेके पहुंचा देता है। बीच में ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी गूगल मैप आपको ड्राइव करके पहुंचा देता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड देन गेटिंग अ स्ट्रेटेजी थ्रू अ गूगल मैप? इज इट द सेम थिंग और इज इट डिफरेंट थिंग? No, it's not the same thing. What is the difference between a Google Map uh, taking you to your destination, and strategy is also a plan to take and get you to your destination, and why the strategy becomes another like a kind of a definition. So अगर आप देखेंगे मैप जो है ना आपको ये नहीं बताता है कि why are you doing this, why are you going to that your destination, and what value that you're going to get it when you get to your destination. It doesn't tell you those things, but the strategy is going to tell you why you need to do this, why are you doing this, what are your achievable. So that becomes the strategy. And also the obstacles और इन अगर आप broader terms में सोचें तो हमें समझ में आता है कि क्या चीजें हैं हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, कैसे हम उस तक पहुंचेंगे। जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं दे रहा था वो और किसी को, एआई। पाकिस्तान के अंदर एआई पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है, वी हैव द स्ट्रैटेजी, वी हैव द विजन, वी वांटेड टू गेट देयर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट कि हमने अपनी असेसमेंट की है या नहीं की है। हम जब असेसमेंट हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त करंट कैपेबिलिटीज क्या हैं। हमारे पास एक समझ लें कि आप पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो इंटरनेट है उसकी जो सहूलतें हैं या हमारे पास जो पावर है वो लाइट ही नहीं है। तो लाइट नहीं है तो अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंटरनेट है तो वो स्लो है। तो क्या हम जो है वो एआई या हम जो है वो जो जो बेनिफिट है जो टेक्नोलॉजी से वो ले सकते हैं नहीं ले सकते? तो ये हमारे पास नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास इतना ज्यादा डेटा है, और लेकिन डेटा अलग अलग सिस्टम्स के अंदर पड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, किस तरह से, दैट इज अ काइंड ऑफ एन असेसमेंट। सो you look at whenever you think about it as a strategy or the product strategy, you look at and you do the assessment to find out कि हमारे पास क्या चीजें हैं, हाँ क्या टूल्स है, किस किस्म की कैपेबिलिटीज है, और कैसे उसको यूज करते हुए इन कंस्ट्रेंट को रखते हुए नजर के सामने रखते हुए हाउ आर वी गोइंग टू अचीव आवर टारगेट, ठीक है। तो दैट्स बिकम योर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चांद पे पहुंचना था, चांद पे तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कि चांद पे पहुंचने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास रॉकेट बनाने के लिए भी सामान होना चाहिए, हमारे पास और चीजें भी होनी चाहिए, देन यू गेट टू दैट स्ट्रेटेजी। ओके, द नेक्स्ट वन। So those are some of the things, the product strategy that you should consider, जिसको हम लोग कहते हैं in terms of the understanding the concept, understanding of focus market. आप you're looking at the focus market, knowledge of customer needs and problems. So you need to know कि आपका जो product है वो आपको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं हमारे पास किस कस्टमर के लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम उसकी नीड और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं नहीं। डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट वी आर बिल्डिंग, सो आप प्रोडक्ट की जिसमें लोग कहते हैं फीचर्स बनाना, किस किस्म के फीचर आप ऑफर करेंगे, क्या ट्रेड ऑफ्स है, ट्रेड ऑफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या उसके अगेंस्ट जो है वो क्या आपको मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आप सब लोगों को मालूम है कि नेटफ्लिक्स हम मूवी वॉच करते हैं, उसके अंदर शोज होते हैं, उसके अंदर आई डोंट नो हाउ नेटफ्लिक्स इज पॉपुलर इन पाकिस्तान और नॉट, बट इन वेस्ट it's very popular, especially in Canada. So most of us we watch our movies and our shows on not on Netflix. सो नेटफ्लिक्स 1997 एंड 2007 के अंदर जो था, दे बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन डीवीडी रेंटल स्टोर। अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में इस दौर के अंदर 1997 के अंदर आपको मूवीज़ देखने के लिए आप डीवीडी आप रेंट करते थे या डीवीडी बाय आप करते थे ताकि आप उसको बनाते थे। तो नेटफ्लिक्स ने उस ज़माने में ड्यूरिंग दिस टाइम दे बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन डीवीडी रेंटल स्टोर। दे वर रेंटिंग द डीवीडीज मूवीज ऑन डीवीडीज।
And then what they did is in 2007, they pivoted its vision to become a number one in video streaming. That's how they started. They changed their dynamic. They didn't want to stay on the DVD rental ही काम करना, आगे नहीं बढ़ना. They transformed themselves and then converted themselves in the video streaming technology. And that's what very important. So the pivoting its vision, so they think about it and they change it and move it to the video streaming. अगर आप अभी current आप देखोगे Netflix को, तो Netflix has been partners with the Warner Brothers, if I'm not mistaken, and they're gonna be becoming one of the other like movie makers. ठीक है ना, they're gonna be creating movies. So अगर आप उसको देखोगे कि how the Netflix product strategy was changing. So because we're just talking about this video streaming, so in this we just gonna be talking about their product strategy for the video streaming. We're not talking about the current strategy that they're looking at and making their own movies with partnering with other organizations. The first one is the developing the video streaming technology. That they develop the video streaming technology, provision of high quality video and sound, personalization and movie recommendation engine, developing original content series. So it's very important to understand the capability. So this is the first capability they they wanted to have it in order to deliver the video streaming, is to develop the video streaming technology. Without the video streaming technology, they won't be able to reach out to their customers. They won't be able to, their customers won't be able to watch the movies. ठीक है ना. तो अगर आप उसके previous उसमें चले जाए, when they are DVD, so their product was on the DVD, and then somebody has to rent the DVD in order to watch the movie. But in this case, no, they have to be having a streaming capability, streaming technology. What happened? Sorry. Just give me a second. I think my system got. Can you guys hear me? Yes sir, your voice is clear. My But voice is clear. yes, screen पे वो scrolling हो रही है. Just I think somehow my system got frozen. जी, browsing भी कर रहा है. Just give me 1 second. Can you guys see my screen again? Yes, we Okay, can. okay. So अच्छा that's the capable. सॉरी फॉर इंटरप्शन. मैंने आपके साथ एक अटेंडेंस लिंक का एक क्यूआर कोड शेयर किया हुआ था, तो काइंडली अगर आपको स्लाइड पे उसको लेके आए तो एट 10:30 देन Oh, पीपल कैन मार्क देयर अटेंडेंस. oh, you want to mark the attendance? I think, let me give me a second. I think there was a code that you gave it to me. Yeah, I have given the QR code and the link to Okay, just give what's. me 1 second. जी. अच्छा जी, उस लिंक को और जो मैंने आपके साथ वो शेयर किया था क्यूआर कोड, उसको बस जस्ट स्लाइड पे ऐड कर दें फॉर फ्यू सेकेंड्स ताकि पीपल उसको अटेंडेंस मार्क करें. You want me to share in the chat? नहीं, स्लाइड पे अपना जो पीपीटी है ना सर, हाँ इसको कॉपी करें सर, और अपना जो स्लाइड है उस पे किसी ब्लैंक स्लाइड पे ऐड कर दें सर. Yes, sir. इधर आप इसका लिंक शेयर कर दें चैट में, और यूट्यूब स्ट्रीमिंग पे भी. क्यूआर कोड अगर नहीं भी हो रहा है तो दैट्स फाइन टोटली, लेकिन क्यूआर आप अपना यूआरएल जो है, अटेंडेंस लिंक, वो वहाँ पे शेयर कर दें. दे विल बी इजी टू गो ऑन. श्योर, खालिद साहब आप कंटिन्यू करें. आप कंटिन्यू करें सर. Okay, sorry. And the other one is, the second point is the provision of high quality video and sound. So they need high quality videos and sound. Personalization and movie recommendation engine, and developing original content series. Is that just a check? Did you receive any questions in your chat?
जी सर, एक क्वेश्चन है कि इज कलेक्टिंग नॉलेज ओनली थ्रू सर्वेज और गूगल फॉर्म सफिशिएंट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट इफेक्टिवली सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम? दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स। सो ये टेक्निक्स जो है, ये आप इसको क्वेश्चनेयर जो है वो सर्वे है, जो सर्वे इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू get the assessment, and that's very important. So we'll go through some of the assessment technique as part of uh, our uh, our class today. So I'll get into that question, but that's a short answer. The other thing that I wanted to making sure, and then you guys need to understand as well. I'm not talking about the Netflix, but this is very important. Excuse me. When you watch a movie, आपको ये पता है कि Netflix जो है उसने डेटा और अपनी मूवीज को इतना डिस्ट्रीब्यूटेड रखा हुआ है कि जब आप वॉच कर रहे होते हैं तो आपको अ, जो स्ट्रीमिंग होती है उसके अंदर जो हम कहते हैं कि क्वालिटी में फर्क नहीं आता है, तो क्वालिटी सीमलेस क्वालिटी आपको हर जगह से मिल रहा होता है। एंड इवन इफ यू हैव अ लो इंटरनेट बैंडविड्थ, तो उसके अंदर जो है वो किसी तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि अ, उसको स्टैक करता है, देन फिर वो उसको प्ले कर रहा होता है। So there are different ways and techniques that Netflix has. So that's why they started talking about the provisioning of high quality video and sound without impacting the user experience. So it's a very important capability that Netflix has built it, and thus the other companies are coming up and they are developing if they wanted to stay on the streaming media. The other thing is the product goals. So goals जो है, I think from the product perspective is the definition is specific measurable objectives that help track progress towards the vision executed through this strategy. So includes the timeline, focus on a growth, user engagement, profitability and product quality. तो अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने एक एग्जांपल इसमें ली है जो कि नॉर्मली लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो आई टेक एन एग्जांपल, आई कैन टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टेस्ला। तो टेस्ला के हिसाब से कि टेस्ला का विजन क्या है, और जिसको मैंने आपको विजन के लिए ये बताया था कि इज अ ड्रीम। तो टेस्ला के विजन को अगर आप देखें, आप सब लोग टेस्ला को जानते हैं, तो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, and they are the pioneer in building the electric vehicle. So the Tesla जो है उसका the vision statement है to create the most compelling car of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicle. So that's their dream. मिशन जो है, जिस मिशन को डिफाइन इस तरीके से करते हैं बाय डेफिनेशन इज द कोर पर्पस। उसका कोर पर्पस क्या है? टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। तो उसके अंदर कोर पर्पस बता दिया। गोल्स क्या है इसके? तो इसमें मैंने अभी 3 गोल्स लिस्ट किए हुए हैं। मैस मार्केट अडॉप्शन है, एनर्जी एक्सपेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है। तो दोज आर दी ब्रॉडर माइलस्टोन। सो अगर आप अपना टारगेट, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी में अगर आप करेंगे, तो हाउ यू गोना बी सेटिंग अप, लाइक व्हाट आर योर माइलस्टोन, द ब्रॉडर माइलस्टोन्स क्या क्या है आपके। तो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ताकि आप उसको अलाइन कर सके अपने गोल्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसको ऑब्जेक्टिव्स आप इस तरह से समझते हैं कि स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सो सेल्स वॉल्यूम, तो टेक्स्ट लगेगा इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 30% दिस ईयर और द नेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. So that's how you put together the objective that you can measure how your company or how your organization is growing. Business growth, at least 50% growth in energy business for 2025. That's you are setting up. That is very specific, that is very measurable, जिसमें आप इसको कह सकते हैं कि स्मार्ट गोल्स के नाम से आप इसको समझ सकते हैं। Just a quick recap. So, what we studied in this section, we understood the concept vision inspires and directs. Strategy, what is the strategy? Define the approach or the destination, how you get to a destination with considering all your obstacles, and then understanding your current जिसमें तो कहते हैं capability, and then what are the other capabilities you need to build it. Goals is a measure success along the way, how you're going to be moving along your way in order to get to your destination. So that's the recap. I'll pause for 1 minute and wait for any questions and any concerns they have it. You guys have it, then I'll try to address it before I move on to the next topic. Is there any questions?
All right. If you have any question, please, I you think I can. see one question here. What strategy one should go for when scaling a product as an innovator and considering the interest of early adopters? New competitors start emerging like blue ocean turning into a red ocean. Like we used to have Netflix, now we have other options to Disney, Amazon Prime, HBO. Similarly for Tesla, we are seeing many emerging competitors. What is the best move when market is getting saturated? अच्छा, ये तो होता ही है कि आप जब अगर इनोवेटर बनते हैं तो इनोवेटर अगर आप देखेंगे तो लिटरली टेस्ला दे आर द इनोवेटर। इसी तरह से आप देखते हैं एप्पल है वो इनोवेटर है। सो देयर आर लॉट ऑफ इनोवेटर दे कम अप और बकिया जो है उसको फॉलो करते हैं। इट डजंट रियली मैटर, लेकिन आपको ये करना होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती हैं, जो आपके हिसाब से आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए यू जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, थिंक अबाउट इट एनी काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट you're using it, how to provide that kind of a service। अगर आप उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर आप ये देखें कि एक ज़माने में जब इंटरनेट आया था, जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा करता था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस ज़माने में इंटरनेट जो था वो न्यू, so people were started jumping into and building and providing the services through the internet। ये आपने देखा, वो जमाना आपने देखा। उसके बाद आपने देखा है कि सर्विसेज जो है दैट ट्रांसफॉर्म एंड चेंज इट थ्रू द ऐप। सो आप एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है। सॉरी, आई एम, यू गाइस आर सीइंग मी एज वेल। सो आप जब देख रहे होते हैं उसको, तो यू लुक एट दोज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड के चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड द सर्विसेज आर सेम। इसी तरह से आप जो ऐप के जरिए आप चीजें देख रहे हैं, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दे आर जंपिंग इन एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट दे आर कॉलिंग इट एआई बेस्ड सर्विसेज। एआई से आपको वो सर्विसेज तमाम चीजें आपको मिल रही हैं, वो आपको समझ रहा है और आपको प्रोवाइड करना चाह, तो दैट्स हाउ इट्स चेंजिंग। So the services is getting is like you have now better options to provide the similar kind of a services that you used to get it through the web-based technology. You used to get it through the mobile application technology. Now you're going to get it through the AI-based technology. So it's changing. So you can always come up with a new thing. Sorry, the other question was, I'm not sure who is this Muhammad Inshal. Did I answer your question? Okay, you can just raise your hand, so you don't need to turn on your mic. So I know you're getting the attention. Okay, the other one is, in most of the season, why did we miss example of Pakistan-based startup and how they are leading nationally and internationally? I won't be able to answer that question. So I don't know what the reason is. I something that needs to somehow survey needs to be done and then finding out the reason. Why always, if we are discussing the customer, we exemplified the large B2C approach. If the business and startup is covering the B2B market, how we make a strategy? Similar approach, like business needs to talk to the business and then provide that kind of services। A simple example is जैसे मिसाल के तौर पे आपका B2B2 सर्विसेज है, तो उसको B2C अप्रोच और B2B अप्रोच, इट ऑल डिपेंड्स। तो वो एग्जाम्पल तो कहीं कहीं से आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो बेस लाइन आपको चाहिए होती है किसी भी understanding के लिए। तो it doesn't really matter, the things and strategy is a same approach, nothing change except that instead of you going and reaching out to your to direct customers, you're reaching out to the business, understanding what kind of requirement is there, how you can support them, how you can provide that kind of a thing। So that's another thing that you need to be looking at, but the method and the techniques are almost the same। Okay, I think Shazad Khan, I think I did you get the answer? And then we can talk sometimes later because there's a detailed discussion required for this one। All right. Okay. I'll move on to the next topic. The You guys seeing my screen? Yes, sir. Okay. The product management. So what is the definition of the product manager? I start with the definition: practice of guiding a product through its entire life cycle from idea to launch and the beyond by balancing customer needs, business goals, and technical feasibility।
If you look at this, what are the things that we look at the product management? If you look at the three areas, user experience, technology, and the business, and the product management sits at the center of this one. Technologies, can we build it? If you look at the Netflix example that you saw in a Netflix, what are they looking at? They're trying to build the technology first. Okay, so if they have the technology, yes, they can do it. How the user is going to be experiencing, and that's what they're talking about, the streaming. So streaming technology, they were talking about the streaming technology. How can they provide the streaming capability with consistent, regardless of the bandwidth or regardless of where you are, which country or which like geographically you are located. The business, should we build it, will it deliver value to the business? So that's very important, and that's what it matters. So if you are talking about B2C, if you're talking about B2C, so that's what it matters. So the value, it's if you don't deliver the value, it's not going to be flying. अगर आप कोई भी अच्छी से अच्छी चीज बना दे, वो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको स्केल नहीं कर सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, मतलब मैं बहुत खूबसूरत सी चीज बनाऊं, बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर यूजर नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। उसकी मैं एक एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि जिस तरीके से एप्पल ने अपना मोबाइल फोन जब लॉन्च किया या जब प्रोडक्ट नहीं किया था, उससे पहले मेरे पास डेल का एक हैंडल डिवाइस होता था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2000। उसके अंदर मैं राइट भी कर सकता था, उसके अंदर मैं नोट भी लिख सकता था, लेकिन दैट डिड नॉट गेट फेमस बिकॉज उसकी वजह क्या हुई कि वो स्केल नहीं कर पाया उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को। लेकिन जैसे ही एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी लेके आया, तो एप्पल ने उसको जिस तरीके से यूजर को, यूजर एक्सपीरियंस को, और जिस तरीके से बिजनेस मॉडल को उसने उस तरह से चेंज किया, तो वो स्केलेबल कर सका। तो वो एप्पल आ सका, डेल उसको मार्केट नहीं कर सका, उसको कैप्चर नहीं कर सका। कभी कभी ये होता है कि इनोवेटर होता है कोई, मतलब कोई एक एक इनोवेटर होता है, और एक जो चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि उसको स्केल करके इस लेवल पे लेके आ जाता है कि वो प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसमें बिल गेट्स का नाम आता है, तो जो डॉस है वो विंडोज पे गया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्लीटली जब उसने डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट डॉस, तो दैट प्रोडक्ट वाज इंस्पायर्ड बाय समथिंग एल्स। ठीक है, वो इंस्पायर्ड हुआ, उसने उसको एडवांटेज लिया, देन उसने प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको इन्हांस करता चला गया। बाद में वो टेक्स्ट बेस से उसने विंडोज बेस बनाया। विंडोज से आज आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका प्रोडक्ट वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। उसने अपने आप को कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म करता चला गया और नई चीज़ों को इन्वॉल्व अपने प्रोडक्ट के अंदर बिल्ड करता चला गया, न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा अडॉप्ट करता गया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ into a newer things, into a better things that you can support and you can keep your business intact. कुछ प्रोडक्ट जो है वो we will talk about briefly about the product development life cycle. Product manager roles हैं, तो different roles हैं the product managers. Simple, responsible for defining the right product to build and ensure it delivers value to users and the businesses. Their core responsibilities of the product managers is the areas and the tasks. So you can go through this detail, and then the product management strategy, the methodologies. The product management use the same agile, Scrum, Lean startup, design thinking, and OKRs, objectives and key results. Agile आप लोगों को मालूम है कि सिंपल सा है। agile Scrum जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो ये है कि पहले हम वाटरफॉल कहते थे, अब ये है कि वाटरफॉल जो है वो काम नहीं करता आज के करंट इन्वायरमेंट के अंदर। कहीं कहीं काम कर रहा होता है, नॉट in all the case. In your case, because you are in a product development stage, you need to be agile, you need to be flexible. You to pick up a small target, and then you say, this is the money, this is the feature that we need to be delivering during this time of frame. ठीक है, for example, you block yourself within 6 months. That is my target, that's what I feature need to be developing it, those kind of a resource that I'm going to need it. That is the funding that I required in order to develop that kind of a feature. So that you lock yourself, and then you deliver that feature, and then that's your agile. And then you develop the feature, you got the result, you assess your result, you go back and make some changes, adjustment, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से उसको deliver कर सके. So that's a methodology that you should be using it. A quick recap is the product management is about understanding the customer, defining a vision, and continuously improving the product. So that's the important key is continuously improving your product. And then we'll get into the product lifecycle management, and that's what we're going to be studying it.
So the product life cycle management is important because every product has a life cycle. एंड वाई वी कंसीडर एज अ लाइफ साइकिल। आप अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बनती है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिसके बारे में अब आप लोग नहीं जानते, लेकिन दैट प्रोडक्ट वाज फेमस ऑन देयर टाइम। सो एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट डॉस की एग्जांपल दे रहा था, अब आप इस माइक्रोसॉफ्ट डॉस को नहीं जानते प्रोडक्ट, लेकिन वो इट वाज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर वी व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द कंप्यूटर। Like in that product is gone. Now that product transformed into Microsoft Windows. So the Windows went through different stages, but now we know that product is transformed and a Windows is a brand new product. इसी तरह से आपने databases का नाम सुने होंगे कि आपके पास examples हैं, the word processors हैं. There are a lot of multiple word processors used to be in the market, but you only know Microsoft Word, you only know Google Google के word के नाम, I don't know what the product called, but the Google has a product. So there few of them is left. But most of the other products are gone out of the market. So you need to understand the life cycle is very important. Every product has its life cycle. And what is the different life cycles of the product is? So we broken it down into idea generation, the validation and research, development, and launch. So right now, for example, most of the entrepreneurs that you guys are in ideation phase, that you look at, you think about developing a product. So then your next stage is goes to the validation. You need to do some validation, and that's what we talk. One of the example that you guys have asked is a survey is one method to go through and validate and do a research and making sure that your product is going to work. And then once you know, when you capture all the detail, then you get into a development stage. And then once it's been developed, you can call it as a prototyping or the actual full development phase. Then you launch the product. We'll go into the detail quickly. We'll take an example. Um, uh, this is a case study and a food delivery app. So let's take the name of the app is called Fresh Serve. So it's a food delivery app that we wanted to build it and use as a case study to understand the product lifecycle management. So quickly, what is the vision of the food delivery app is to make healthy, locally sourced meals easily accessible to everyone in the city. So that's what we are looking for. So the strategy is to focus on health conscious user by partnering with the organic restaurants, offering eco-friendly delivery options, and launching a loyalty program that rewards sustainable choices. So that's a strategy that we are looking at. We're not just delivering the food, we're making sure that it's a healthy food that we are providing, and providing the food from the organic restaurant, and it's also the eco-friendly as well. So what is the goal? So these are some of the goals that we put together. We understood what is the definition of the goal. We want to reach out 10,000 active users within the first 6 months and achieve a 4.5 star average rating across app stores, partner with 50 local restaurants, focus on organic meals by the end of the first year. So that's our goals that we wanted to making sure that we put together for our product. So let's look at the overall strategy. So if you look at the overall strategy of this product is food strategy. For we put together the vision statement, we have the product goals, we have the target market, we have the product differentiation, competitive analysis, technology stack, KPIs for success, and product roadmap. So it's answered some of the one of the question that you guys have asked, how to do it, how to differentiate yourself with your competitors. What are the who are the competitor your competitors? So look at the vision statement. So you already put together the vision statement, you already put together the product goals, but you haven't put together the target market. So target market is very important. Who are you building this product for? Who's going to be the user? Who's going to be the consumer? In one of the quick cases, your consumer would be not the consumer. You're going to be your users, or the target market is the business. So you need to be understanding that's the target market that you are focusing. What is your product is going to be differentiating with other available products. So we're saying that these are some of the capabilities that you or the features of your product will be that differentiate you from other products available in the market. And these are very important for you to describe it as part of your strategy. And this is the understanding your
जिसको हम लोग कहते हैं ना कंस्ट्रेंट, क्या है आपके पास इस वक्त, आपकी करंट क्या कैपेबिलिटी है, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड देन you are differentiating what are the new things that you're going to be providing it. Okay. And then competitive analysis, so you understanding, so if you is part of this app, so an example that we there are Uber Eats and DoorDash is available in our area, so that also provides a similar kind of a service. So and then this matters to you, that's how you are differentiating yourself. Grubhub, local health focused delivery services, meal kit services. So during the COVID, there are a lot of these companies got into like they started developing services that is related to the food, how they can deliver the food, how people can remaining in their home, अपने घर में रहते हुए कैसे फूड जो है बना सकते हैं। तो उन्होंने पैक करके सामान देना शुरू किया, तमाम मसाले के साथ, एवरीथिंग दे विल पैक इट टुगेदर। आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं, आपने सिर्फ वो कहते हैं ना कि आपको चूल्हा चाहिए और पतीली चाहिए और आपको बाकी वो तमाम चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करके भेजते थे। इवन ऑयल, या अगर बटर इस्तेमाल करते हो तो बटर, ऑयल, जो इंग्रेडिएंट्स है वो तमाम इंग्रेडिएंट के साथ, और जितने जिस चीज़ के पोर्शन चाहिए वो सब मिला के पार्सल बना के आपके घर के अंदर डिलीवर करते हैं। आपने सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो आप खाना बना सकते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल दैट यू कैन डू इट। What are the technology stack that you're going to be using, and what technology you're going to be using in order to develop that food delivery app? What are the KPIs? KPIs बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं और आप लोगों को समझने की भी जरूरत है, जो कि हम लोग कभी कभी ओवरलुक करते हैं, कि हमें अंदाजा नहीं होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आर वी ऑन अ राइट पाथ, और वी आर नॉट ऑन अ राइट पाथ, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू द KPIs for your success. So you can make some changes. You think that you're achieving it, or you put together a very high optimistic target, but that's not you're achieving it. ठीक है ना, you need to lower it down, you need to make some adjustment, and that's how you look at the KPIs and finding out the result, and then making sure that you're adjusting and tuning your product development, and you're changing the roadmap. And this is a kind of a roadmap, so this is a very good template that I put together for you to consume it, and then develop your strategy, product strategy that you're looking for any of any of your product. So this is just a template. Keep in mind that this template you can reuse it, and the purpose I'm sharing with you this template is to you it's a reusable, thinking about in a different like 8 type of things that you have it here, but that's not, you don't limit yourself into just 8 type of things that you need to know the vision, you need to know the target market. It can be something more, but this is a kind of a starting point for you to understand, okay, if I need to build a strategy, these are the starting point that I need to know, and then I need to put together for my product. Okay, I'll pause here before I jump into another one. Any questions that you guys want to address? Quick question, I'll reviewing your question quickly. Okay, so we are using 9-point technology readiness level, TRL, as our roadmap. Do you think it's the right approach? I don't know what the 9-point readiness level is. What are the things? Okay, I think that's the thing. All right, so those are some of the questions that I look at, but I don't know about this 9-point technology readiness levels, TRL, but we can I will find out the answer and then we can share it later. See, the other thing is, I think you guys see my screen, am I right? Okay. The business model canvas for food delivery app. That's another thing. The business model canvas is popular uh, uh, for the entrepreneurs. They use it to represent what they are. And if you look at this way, it goes from the if you see my mouse is moving from the right side of my monitor and then going toward the left side of it. So for example, the customer segment, who are we building this product for? Okay, so that's your customer segment that you put together in the business canvas model. And then you go jump into the value proposition side of it. What value for each customer segment is going to get out of it? So in this case, in the food delivery app example, our primary users are busy individual, professional, student, and family. And if you look at this one, the busy individuals, so they're going to get the value, fast and easy access to a variety of meal delivered to the doorsteps, and that's the value that you're providing is to your primary user, and that's how you build this business model canvas. And then the other thing that you do it, how you're going to be delivering this value to your customers through which channels.
and the channel becomes important as well. Just like you're building an app, and that app is going to be is a mobile app, the platform ordering and tracking uh, um, your customers, and customers can order through the app. So that's how you are using these channels to provide the value to your customers. So that's the channel is important, that you add and list everything to your channels. And if you look at on this side of it, what are the key activities that you're going to be doing it? The app development and maintenance is one of the key activities that you would be doing it, to continuous improvement of the app features, updates, bug fixes, and new releases. If you go back to the Netflix example, you saw that they wanted to develop the streaming technology in order to deliver the streaming content to their customers. So that's the key activities for them to do it. Partner management, collaborate with restaurant, onboard a new partner. So that's another key, the partnering thing that they need to be doing it. Marketing and promotion, they have to be doing it. Uh, and then if you look at their partnership, so that's a partnership is also very important. आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग होगी, आपकी रेस्टोरेंट जो है वो पार्टनर्स होंगे, आपके अदर जो मिसाल के तौर पर डिलीवरी प्रोवाइडर्स है, that will also become an partners as well. आपके key resources क्या क्या होंगे? What are the key resources that you're going to need it? So you need to have a technology infrastructure where you can build the application. You need to have a platform where you can support the application, and then you have to be how you're going to be delivering and providing the delivering uh, the mails to the customer. Sorry, I'm got distracted with the call. Customer data. How are you going to be storing the customer data? Where are you going to be storing the customer data? And how the customer can make changes to their preferences. So those are the things that you need to be doing as a key resources that you need it. What are the cost structure for it, and how the revenue structure is going to be going through this? So you're going to be discussing the cost structure. In this case, food delivery app, our cost structure is the app development and maintenance cost, partner management, and marketing and promotion. And then revenue structure is charging a delivery fee per order. That's how we're going to be getting our revenue. We are thinking to get a commission on orders. Each order that is going to be delivered, we're going to getting a commission. And then premium membership we can offer, just like अगर आपको पता है Amazon आप इस्तेमाल करते हैं, Amazon जो है वो प्रीमियर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर आप उसके प्रीमियर कस्टमर से, तो दे गिव यू Amazon as a free. You can watch the Amazon videos free. You can also get delivered on a free of charges if you are a premium customer. So that's how you should be thinking about premium membership. Okay, so I'll go through the cycle. We studied the product life cycle. For the product life cycle, in case our food delivery app, how are we going to be doing a product life cycle? So go through this each of these phases and understanding how we did it. So this is another kind of a template that you guys can use it for your product development. So the idea generation for fresh serve. So what is the objective? So identify gaps in the current market and define what unique value of the new food delivery app could bring to customers in the restaurant. So that's the objective. And what is the problem that you have already identified? So many existing food delivery services have high fees impacting both restaurants and customer. That's where you're finding out the problem. Long wait times, particularly during peak hours, lead to poor customer experiences, limited options for eco-friendly delivery or sustainable food choices. So this is one of the things that you are solving it, and as part of your the key differentiator that you're looking at in your product. Opportunity. So those are the opportunities that become your new opportunities, and that's what you are exploiting this opportunity in your product development. A food delivery services that offers flexible, lower cost delivery option, such as a bicycle couriers or a community drivers. So आप इस कह लेके जैसे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो तो वो भी कर सकता है, वो इको फ्रेंडली हो सकता है. So that's what you're looking at your as one of the differentiator. Introducing a service focused on a local eco-conscious restaurant with sustainable packaging, enhanced customer experience with faster delivery in a smaller services area. So that's your idea generation for fresh serve. That's how you're coming up your product development as a fresh serve and during the ideation phase. Now, looking at the next phase is how are you going to be doing it, and that's what we are looking at, the validation and research. Okay, so how are you going to be validating these things? Uh, so if you're looking at the target audience and persona development, primary personas
young professional that you found it. Okay, so how you gonna be doing it? So these are the customer segment that you're looking at, and that's how you're developing it. So what are my target audience and persona development? Define the target customer base, creating personas to guide feature prioritization and app design, and these are your primary personas and what they are looking for. Competitive analysis and market research. That's where you're looking at how you're going to be doing the competitive analysis. Okay. So the findings is you look at any other tools and then you're finding out dominant players like Uber Eats and DoorDash focus on a broad market with high fees and extensive restaurant choices. Local players often lack mobile app features like real-time tracking or sustainability options. So those are your findings through some of the tools that you use it in order to develop it. And then you're doing the key features and unique selling point that you are looking at. So these are the key features and unique selling point that you did it with the objective. What are the core features and what are the unique selling point that you're coming up? So it's a community focused approach, emphasizes on local restaurant and eco-conscious options, flexible delivery option, bicycle and e-scooter delivery for faster, eco-friendly and low-cost option. I think, yeah, concept validation. So this is the concept validation that you're doing through the research and customer feedback. And I think that's one of the questions that you're asking about. Is this Google Sheet or the survey is the only method? There are different ways of doing things. That's why you do the seminars, you invite people, you invite the businesses, you interact with them, you find out they and you do the validation. So one of the things is the surveys and focus group, but we are taking an example of food delivery app. So how we did it. So we conducted surveys among potential users to gauge interest in eco-friendly delivery options and lower cost structure. So how do you find the सर्वेज एंड फोकस ग्रुप सो आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया सो सोशल मीडिया आपको बहुत सारी सर्विसेज आपको दे रहा होता है कि आप वो यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया और एक स्पेसिफिक जो कहते हैं कि ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एज ग्रुप बिटवीन 25 to 35, so you can target those specific. You're looking for a male customer, you're looking for a female customer, you're looking for the teenagers, you're looking for the adult customers. So and then you're looking for something that is a highly educated society. So those are the things that you can got all those details from the social media, and then you do a targeted and focus campaign and get the and validate your concept and make and capture all the detail that you needed. So this is a sample result in our the use case. 80% of surveyed users are interested in lower delivery fees, even it means waiting longer. So they don't really care about whether it's delayed, but as long as the cost is low, then that was matter to us. 70% of eco-conscious customers are willing to pay a premium or sustainable delivery options. Local restaurant owners express frustration with high fees on current platforms and are open to exploring a new service. So that's what they're looking for. The other thing which is important, the defining the minimum viable product MVP. So without getting to, so you guys should know the and understand the definition of MVP is a minimum viable product that's been used. It's a prototype development or something that you do it. The difference between a prototype and MVP is that prototype is to validate something, whether that is going to happen or it's not going to happen. Uh, for example, if you want to do something, you try it out and making sure as an innovator, yeah, it is going to work or it's not going to work. And so that's what the outcome is. But when you look at the minimum viable product, means it's not validating your product. Minimum viable product is basically you're looking at you have something as your product delivery, and then let's go back to this one. Just like you want to deliver something as one of the value that you wanted to deliver uh, is the, for example, like in our case, this the customer can use the app and then start seeing the list of the product uh, through their app. Okay, what products are available or what food option they have it available. So that become one of the feature that you are delivering as part of the MVP or the minimum viable product. But in a prototype, मैंने कभी मोबाइल ऐप डेवलप नहीं किया है, तो
मैं मोबाइल ऐप डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो मैं पहले तो ये प्रूफ करूंगा कि मैं मोबाइल ऐप को मैं डेवलप करूँ। पहले तो मैंने एक ऐप, छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद मैंने उसको टेस्ट किया और मैंने कहा यस, आई कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप। सो दैट्स बिकम योर, we call is you developing something and validating, yes, I have the capability, I can do it. But minimum viable product is different, because now you are not validating, you are developing a feature of others of your product, and then giving this to your just early users, so they can use that product, they can start using the product from their जो भी आप जिसके जरिए how you're delivering your product to your customers. Okay, I'm just going fast. I know I'm running short of time. And then there is some pre-launch phase, and there is a launch event. So I'll just quickly recap what we will look at in this one. Is the idea generation, uh, how you're brainstorming and exploring ideas by identifying the customer needs and marketing trends, and then you do a validation and research by conducting market research and gather feedback to validate demand and define the concept. And then when you get into the development, you actually build the product, starting with the prototype, and work with designers and engineers to ensuring that your product is really start delivering the values. The launch phase, that you go execute a go-to-market strategy, including pricing, distribution, and initial marketing efforts. Expand the product by adding features. So that's what you get into the scaling and growth and scaling phase, where you need to be adding more features, you're broadening your marketing efforts and attracting the user. And maturity and decline, because that's also very important. Every product has a maturity level. When it reaches to the maturity, either it's going to decline or you need to change the strategy. And I'll pause it here because that's what I covered in 1 hour. But if you have any questions quickly, that I will be able to respond to that. So if you guys want to talk, you can unmute your mic and then you can ask the question directly. I'm ready to take the question. All right, sir. Thank you so much for the very brief presentation and session. अच्छा जी, जिनका भी कोई भी क्वेश्चन हो हम चैट से भी ले लेंगे, लेकिन वो हैंड रेस करके हम उनकी माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं. Hmm. Let's say, sir, a few questions in the chat. As a founder building a food tech platform, what strategies can I use to build trust-based long-term relationship with all the key stakeholders, like farmers, students, consumers, and especially in the early stage of the startup? Okay, so I'm reading out. As an early stage farm to table startup, how can AgriSync AI effectively connect farmers and consumers with reliable logistic and delivery partner while keeping cost low and service trustworthy? Okay. So let's take an example. This is a good example that you're saying, and you're also describing it. So you already know you need to connect with the farmers. So you know the farmers. अगर आप इसको इस तरीके से देखें, समझिए कि फार्मर्स की लिस्ट आपको कहाँ से मिल सकती है. हाउ डू यू गेट द फार्मर्स, एंड देन हाउ यू गोना बी कनेक्टिंग टू द फार्मर्स. तो फार्मर्स के, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर कोई फोरम है, कहीं सारे फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, या आप उनको, आप कितने पढ़े लिखे होते हैं, अगर आप सर्वे भेजेंगे तो वेदर दे विल बी अंडरस्टैंडिंग or they will not be understanding. It's better to talk to them directly and get the response directly from them. ठीक है. तो कोई ना कोई आपको तरीकेकार ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको फॉर्म ढूंढना पड़ेगा फार्मर्स की. जैसे कि कोई अगर मीटिंग होती है, आप उनके पास जाएं, उनको जाके अपना एक्सप्लेन करें, उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझे, और फिर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के देन यू गोना बी लुकिंग एट हाउ यू गोना बी प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज टू देम. एंड देन कीपिंग कॉस्ट लो एंड सर्विस ट्रस्टवर्थी डिलीवरिंग पार्टनर. तो मुझे नहीं पता आपका आपका प्रोडक्ट क्या, इन टर्म्स ऑफ व्हाट value they're going to be delivering to the farmers, but as long as you understand the if you develop the questionnaire and reach out to the farmers through other means, like मुझे पता है कि आप सर्वे ऑनलाइन तो फार्मर से आप कर नहीं सकते. मुझे नहीं पता उनकी जो क्या कहते हैं कि
whether they can use the mobile phone to log in and then get all the information that you're looking for, or it's better to talk to them individually, do a phone survey. आप कॉल करें, इनका अगर नंबर आपको मिल सकता है तो आप उस तरीके से भी आप उसे कर सकते हैं. Is that did you get the answer, Mohammad Tariq? Okay, what are the other question? Is there anything that I'm missing? जी सर, चैट के अंदर यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है, लाइक what's your suggestion if the environment or infrastructure doesn't support your product, like executing or scaling certain product? दोबारा रिपीट करना मेरे भाई. जी जी, क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर सजेशन इफ द environment or infrastructure doesn't support your product, like executing or scaling a certain product is brutal when it comes to most of the LMICs, but can be executed easily in any HICs having more reliant infrastructure and policies. Will it be a good move to change the target market, like food delivery app in urban versus the rural areas? बिल्कुल, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ये नहीं कि वट एवर स्ट्रैटेजी दैट यू आर बिल्डिंग, सो द स्ट्रैटेजी की अगर जो डेफिनेशन जो अगर आपको जैसे मैंने बताया था ना कि you have your destination, you know where you are today, and this is your destination that you need to be reaching out, and what are the constraints that you have it, the constraints or the obstacle that you have to go through this one, and if you need to change the strategy, you change the strategy. ठीक है, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं. इट डजंट रियली मैटर कि अगर आपका टारगेट मार्केट जो है वो ये है कि आप अर्बन एरियाज को अगर आप कर रहे हैं, अगर आप रूरल में कन्वर्ट करना चाहें रूरल में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन यू हैव टू चेंज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, क्योंकि रूरल की मार्केट के लिए आपकी चीज़ें जो कंस्ट्रेंट है वो डिफरेंट होगी, जो अर्बन की जो कंस्ट्रेंट है वो डिफरेंट होगी. अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद साहब कोई हैं, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है. जी मोहम्मद तारिक, अपना म्यूट करें माइक को. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, मैंने आगे दो क्वेश्चन जो मैंने किए थे पहले फार्मर्स के जी पॉइंट ऑफ व्यू से ना. जी जी. असल में फार्मर्स जो ना वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट नहीं है. पता है आपको, मंडियों में जाता है सामान, वहाँ से वो बड़ा सस्ता रेट पे चीज़ें जो ना प्रोवाइड करते हैं. फिर कंज्यूमर जो एक्चुअली यूज़ करना चाहते हैं उनको, मतलब आगे मार्केटिंग में दोबारा आता है, वहाँ से मतलब जो है मेन सेलर दुकानें वाले वो लेके आते हैं. फिर आगे जाके फिर वो ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है ना वो 10 रुपए की चीज़ है तो 100 रुपये की जो है वो पड़ जाती है. अब मैं जो है ना वो एक ऐसी ऐप लॉन्च करना चाह रहा हूँ जो पहले किसी जगह भी नहीं अभी आई हो. उसमें फार्मर्स और स्टूडेंट्स के साथ ना कनेक्ट करके अब इनिशियली चीज़ें जो ना वो प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहा हूँ. तो उसमें मुझे कोई हेल्प चाहिए थी. मैं क्योंकि खुद एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में पढ़ा रहा हूँ, तो फार्मर के माशाल्लाह. साथ मैं ऑलरेडी इन कनेक्शन में हूँ. हम्म. और मतलब मैंने एआई का कोर्स भी अभी किया हुआ है, तो इसमें मैं एआई भी यूज़ कर रहा हूँ. एग्रीसिंक एआई जो प्लेटफॉर्म में फर्स्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो इसमें स्केलेबिलिटी भी है और ग्रोथ भी है और सब चीज़ें ही ऑलमोस्ट है. अब इशू जो है इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें पैकेजिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें लॉजिस्टिक भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं. ये स्टूडेंट्स मेरे नहीं होंगे, किसी भी जगह से हम अपने ऐप के साथ कनेक्ट करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं. कि मतलब इसमें जो विजन था कनाडा का भी आप जिस तरह बताया है, इसका काफ़ी ब्रॉड विजन है. उसकी बेस पे हम कई चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. इको फ्रेंडली भी इसमें आ जाएंगी कि वो सारे ट्रक एक जगह जाएं, फिर दूसरे जाएं, तीसरे जाएं. तो हमने काफ़ी मतलब पेट्रोल भी सेव कर लेना है और काफ़ी चीज़ें अदर भी सेव कर लेनी है. इसमें कंडीशन गाइड करें मुझे थोड़ा सा. थैंक यू. अच्छा, ये आपका आपका क्वेश्चन, मैं फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं समझा कि क्वेश्चन क्या है आपका. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से मैं क्वेश्चन, मैं आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता इस वक्त. नहीं सर, एनीथिंग प्रोडक्ट दैट नहीं, इज. तो मैंने आपसे जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ इसमें फार्मर्स के पास जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो हाँ फ्रूट हाँ. है, वेजिटेबल्स है, वो मतलब किस तरह मैं उनको मार्केट तक पहुंचा सके आप. मतलब कंज्यूमर तक पहुंचा, मार्केट में मैं नहीं लेके आना चाह रहा, डायरेक्ट अच्छा, तो कंज्यूमर तक. हाँ, हाँ जी. डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सके आप. जी जी सर, ये अच्छा, क्योंकि अब मिडिल मुझे मैन को इसका. मैंने खत्म करना चाहता हूँ. अच्छा,
तो आप उसको सोचें डिफरेंट स्टेजेस में कि कैसे आप पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप एक इसको मॉडल को इस तरह से समझे कि जब ऑनलाइन का बिजनेस आया तो हर कंपनी ने के पास अपना वेबसाइट नहीं है, मतलब कंपनीज जो थे दे डिडंट हैव देयर वेबसाइट ऑन देयर ओन। They used to go out and get the website hosted and sell their product through their other website online businesses, जैसे कि Amazon है। तो अमेजोन जो आपको प्रोवाइड करता है, आप उसमें अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट भी बेच सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ, जो आपके एग्जांपल है। ठीक है। तो आप जो प्रोडक्ट देखने के लिए एग्जांपल को आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हाउ दे कैन इंटरेक्ट with the customer because they don't know. So you are becoming as a service provider to connect with the farmers. The farmers के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, so you are collecting all the product or all the details from from the farmers, and then you have the customers at the same time. Okay, the customer Yes, is registering, a customer is providing and then getting the product directly from those farmers. तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना आपको समझने की जरूरत है। मतलब आपका जो फार्मर्स है, अब वो डिलीवर प्रोडक्ट कैसे करता है, क्या रॉ के फॉर्म में करता है या पैकेजिंग फॉर्म में करता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि पाकिस्तान से मैंगोज यहाँ पर आते हैं। तो मैंगो जो पाकिस्तान से आते हैं, तो पाकिस्तान से जो मैंगो लाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स के अंदर उन्होंने 6 मैंगोज रखे होते हैं बड़े बड़े साइज के। उसको किसी न किसी तरीके से वो करके वो बॉक्स की शक्ल में बना के कंटेनर में चढ़ा के जहाज में चढ़ा के बेचते हैं, तब जाके वो पाक यहाँ पर उतरता है कनाडा के अंदर। कनाडा में कोई इसको क्लियरिंग कराता है, क्लियरिंग करा के वो डब्बे जो हैं मुख्तलिफ स्टोर्स में पहुंचाता है। और स्टोर्स में पहुंचाने के बाद हम लोग जाते हैं स्टोर्स में से वो मैंगोज के बॉक्सेस जो है वो खरीद के हम मैंगोज खा रहे होते हैं पाकिस्तानी। लेकिन समहाउ अगर आप इन सब चीजों को कनेक्ट करें तो आपको एक कंप्लीट लाइफ साइकिल नजर आ जाएगा कि समहाउ समवन इज प्रोड्यूसिंग द मैंगोज, someone is packaging the mangoes and looking at the qualities of the mangoes, and someone is sending that mango through some kind of a service that get delivered, and then वो जहाज में चढ़ाता है, जहाज से फिर यहाँ आता है, क्लियरिंग एजेंट के साथ क्लियर करता है, डिलीवर करता है। तो आपके भी इसी तरह से जो इसको अगर आप समझेंगे इस फेजेस को, तो आपको अपना प्रोडक्ट का पूरा समझ में आ जाएगा। The who should be involved, how the product should get to your end customers. तो आपको तमाम चीजों को जब आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइकिल। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन तब डॉक्टर ताई साहब? ठीक है सर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे फील्ड से रिलेटेड भी हैं। क्वारंटाइन में मैंने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है, वो मैं समझता हूँ। अगर बाहर भी यहाँ से भेजना है ना, तो विजन मेरा वो मतलब इन चीज़ों सब में है। अब जी जी इशू है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रोडक्ट्स को लेके चलें। जो मेन प्रॉब्लम, जो मेरा फील्ड नहीं है असल में, असल जिधर मैं स्टक हुआ हूँ। वरना बाकी चीज़ें जो आप जितनी बताई ये सारी मेरे विजन में है, मैं इनको अंडरस्टैंड करता हूँ प्रॉपरली, जी। जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। थैंक यू ठीक है। तो ठीक है, तो देन वी आई थिंक the concept you are taking, and this is one of the course. I think I'm hearing a lot of background noise. uh, इजहार, मेरे ख्याल में तुम्हारे पास से आवाज आ रही है, कहीं किसी के पास से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा आवाज? अच्छा जी, ये मोहम्मद तारिक आपके नहीं नहीं, अ, मेरे ख्याल में अहमद नदीम के पास से आवाज आ रही थी। एनिया, ये सो आई बिल्कुल। थिंक यू गॉट द पॉइंट। आई थिंक जो सीरीज है इसमें से ये एक सीरीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, लेकिन इसके अंदर और भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इजहार आपको बता देंगे। स्केड्यूल आप देखिएगा तो उसमें तमाम चीज़ों को ये कवर करेंगे। ठीक है, देन यू गेट अ कंप्लीट आइडिया वेयर टू स्टार्ट। लेकिन अभी आपका जो चल रहा है वो आइडियाइजेशन के फेज के दौरान है। इस आइडियाइजेशन के फेज के अंदर यू नीड टू बी वैलिडेटिंग योर कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपके दिमाग में कंप्लीट पिक्चर है। तो माशाल्लाह अब आपको ये पता है कि what are the things that you need to do it in order to deliver it, and then you will learn what is the first step that I should be doing it. The first step इसमें अगर मैं जो समझ पाया हूँ, जो अपनी कम उसके आपके तमाम बिजनेस को समझे हुए, तो आपके पास फॉर्मर्स की लिस्ट होना चाहिए जो पहली प्रायोरिटीज है। कि कहीं ना कहीं से आपके पास वो लिस्ट मिलनी चाहिए फार्मर्स की, जिसको आप रीच आउट कर सके, जिनके उनके प्रोडक्ट्स को आप डॉक्यूमेंट कर सके और उनके प्रोडक्ट को समझ सकें। फिर आपको ये पता होना चाहिए, कुछ सर्वे होना चाहिए कि भाई उन प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, किन यूजर्स है, कैसे आप कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे। देन यू डिलीवरिंग दैट रीच आउट। द अदर वे अराउंड कुड बी you're knowing, understanding the customer requirement first, and then you're finding out the right farmers, how which farmers provide that kind of a service of that product, and then you're connecting with them, and then trying to build some kind of a, जो कहते हैं ना कि आपका तरीकेकार ये होना चाहिए। I don't know, it depends how you wanted to reach out to them, डॉक्टर साहब।
Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, I'll take one more question, Izhar. Sure, sir. There is a one question on YouTube. मैं read करना चाहूँगा. Uh, could you please talk about the blue ocean? Is a founder where we play the blue ocean or red ocean is a startup? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्लू ओशन क्या है और रेड ओशन क्या है. जी. अच्छा जी, इनका क्वेश्चन जरा डाउटफुल है. So बाकी basically, what I'm reading out here on the internet, I just type in the internet. So it refers to a business strategy that focus on creating new uncontested market spaces, making competition irrelevant. And the red ocean is the idea is to explore the vast empty ocean of market opportunity that rise when new industry innovation emerge. So that's the concept. That's what I reading out. So I got it from I don't have the concept myself, but I searched it on the internet, and that's what I'm getting the definition. जी. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि व्हाट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी स्टार्टअप टू स्केल ग्लोबली? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत काम हो रहा है और माशाल्लाह टैलेंट की भी कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर. फंडिंग गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल है कि फंडिंग दे रही है, लेकिन द गवर्नमेंट का जो फोकस है इस वक्त वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है. तो अगर आपको एआई रिलेटेड काम करना है तो मेरा ख्याल है कि somehow you reach out, look at the website from the planning commission of Pakistan. You will be able to find out there are some funding available. And अभी रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि they are ready to invest money in the AI technology. तो फंडिंग आपको मिल सकती है अगर somehow you can justify कि आप जो भी बिल्ड करेंगे प्रोडक्ट उसमें एआई को यूज करेंगे. जी श्योर. सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट which we can address it. So Khalid sir, we can conclude the today's session. Thank you so much for your time. Thank you very much. uh, yeah. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you everyone. जूम के पार्टिसिपेंट्स एंड यूट्यूब के पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों ने उम्मीद है इस पूरे प्रोग्राम को वॉच किया है और लर्न किया है. होपफुली इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.